I think I guess you must be learning apart from my class as well, as far as the grammar is concerned, right? Yes, sir. So you have been taught in detail. Because I gotta be quick, that is a little problem. I don't have too much time to go in a lot of detail, but I'm trying to do whatever I can do in a very short passage of time. That is how I've got a problem. That's why I have to be a little quicker. Walaikum assalam. How are you doing? How are you all? Alhamdulillah, sir. How about you, sir? Yeah, well, Very good okay, evening. fine. Yeah, very good evening to you too. I'm just doing my job, sitting at the call center, waiting for the land, a call for landing. That's what I've been doing since morning. Yes, I sir. received a very quite less calls today. No problem, it happens. Okay, yesterday we did can and could have as well. So, okay, now we can use the interpersonal usage of can and could, like a permission, request, offer, criticism as well. Like, okay, we can use can to give and refuse permission, or we can ask for permission. Like I said, can I come in? That is, you can ask and give permission in the can. You can use can and the could as well. Okay, could as well in the present. Very, very formal or polite. Can we are using when you know someone. Could you are using when you don't know someone. Usually the person you don't know, or you are being too much formal, or you are being too much polite. That is why you are using could. And can you are using when you are little less casual or little casual with someone. That is what you are using can. Okay, we use can to ask or give information. Can't is to refuse permission. Okay, like I asked, can I come in? I said, yes, of course you can. Or I said, sorry, you can't. Yeah, I'm afraid you can't. Can I have some more cake? No, I'm afraid you can't. Okay, let me share the screen. I forgot to share the screen. And you'll be complaining later on, there is no screen. Okay, let me share the screen. Screen is just a formality, but I have to do it because models are going on. Here you go. Okay, let me set the screen so I can explain as much as possible regarding the model words. Okay, here you go. That is the screen. Must, may, might, can, and we are doing the can today. Can and could. Okay, can we can ask, use to give, ask, and refuse permission. Like I said, can I come in? You said yes, you can, or you said sorry, you can't. Yes, Ms. Kamal, do you have any question right now? Before we just started, we have just started. No, sir. Okay, we are just raising a hand. Sir, may I? Sir, I want to ask that like we use can with whom, like with whom we don't know them, like we know them, those people, and we use could Yeah, with you whom. you know them and you are little close to them like a friendly. So you can use can, and could you are using the person you don't know much. So you are using could for when you are being Like polite. could is very formal and polite. Yeah, very formal. Like a boss, you can ask, sir, could I come in? Or from your friend, you can ask, okay, can I use your mobile? And sir, I can also use here like may I in Yeah, may I formal way. also, you Like, can use may I may is come in? also very formal. Yeah, you can use may I come in. May is very formal as well. Yes, you may. Yeah, sorry, you May can't. Yeah, more you can't. may is more formal than could, sir. Yeah, may and could are same, polite and formal. You can use either could or may. It's up to you, whatever you want to use. Yes, Okay. ma'am. Thank you, sir. Or we can give a direct permission as well without asking. In can, you can give a direct permission or direct permission भी दे सकते हैं. Like I said, you can ask any question. You're not asking any permission, but I'm giving it to you. I said, okay, you can join my class, or you can ask any question. आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं. Or you can go, you can leave the class. आप class से जा सकते हैं, no problem.
है ना, लाइक आई एम गिविंग अ परमिशन विदाउट आस्किंग, बगैर पूछे भी हम परमिशन दे सकते हैं कैन में, है ना। आई सेड यू कैन सिट हियर, लाइक आई एम गिविंग यू परमिशन, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन, ओके, और यू कैन सिट हियर, यू कैन कम इनसाइड, यू कैन लीव विदाउट आस्किंग। सवाल बगैर पूछे भी परमिशन दे सकते हैं ना, वी कैन गिव परमिशन विदाउट आस्किंग क्वेश्चंस, or we can give permission with asking questions. Like somebody says, can I come in? They said, yes, you can. Can I use your mobile? Yes, you can. Yes, sorry, you can't. Or if you are being formal, we also use could for the permission. It is more polite and formal than can. We do not use could not to refuse permission. अच्छा, अगर permission आपने refuse करनी है, do not use could not, use can't. Like I could I come in? I thought, sorry, I'm busy, you can't. Do not use could not. Even if you are asking taking a permission from could, even if you want to refuse it, use cannot, do not, use could not से permission refuse नहीं होती, cannot से, you need to remember that you cannot say could not, sorry, could is wrong over here. Like could I ask you some personal question? You said yes of course you can, not could सिर्फ हम सवाल पूछने के लिए इनकार कर सकते हैं, for positive and negative you can use can. Yes of course, I said could I come in? So yes you can, not yes you could, it's wrong. ये याद रखें, कैन से हम सवाल भी पूछ सकते हैं, जवाब भी दे सकते हैं, लेकिन कुड से हम सिर्फ सवाल पूछ सकते हैं, जवाब और इनकार नहीं दे सकते इन इंग्लिश, दैट इज रॉन्ग अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन। सर कैन के साथ हम बी यूज कर सकते हैं, कैन बी किसको? या इस तरह कैन के साथ बी। हाँ कर सकते हैं, कैन आई बी कैन एट बी योर असिस्टेंट, कैन आई बी एट योर असिस्टेंस, कैन आई बी हेल्पफुल, वी कैन यूज, बट यूजुअली वी आर आस्किंग एक्शन वर्ब वी आर टेकिंग, कैन आई बी एट योर सर्विस, यू कैन यूज, क्या मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो सकता हूँ, कैन आई बी एट योर सर्विस, और लाइक हाउ कैन आई हेल्प यू, that is also, that is offer. Can we are using for the offer as well, but the first of all we are using can for permission in an interpersonal usage, like a permission, request, offer, ये सारा हम can में कर सकते हैं। अच्छा, we can do the could as well, we can use the could as well, but the could is very formal, but only in a question, not in positive and negative. Positive negative में हम could को इस्तेमाल नहीं करते, could को हम सवाल में इस्तेमाल करते हैं, you need to keep in your mind, like if you are asking, may and might are also used to give permission, may और might को भी हम, may को भी हम use कर सकते हैं for the permission, for asking and giving permission. They may be more formal than can and could. Some people consider that are more correct. In fact, the could are normally preferred and formal. Can, may also you can use for giving and taking permission. Okay. Can say without asking permission, बगैर मांगे भी permission दे सकते हैं ना. Like I said, you can, not you could. You can ask Sir, any screen question. is not visible. Well, I'm explaining. You don't need any screen. Why do you need a screen for? I'm not sharing any screen. I'm just explaining. Screen is there, but normal screen is over there. Okay, I say I can see the could in detail. We have already taught. I can see. Yeah, here you can see can and could. But I have taught in you more detail. More than that. सही जी, कैन में हम परमिशन ले भी सकते हैं, दे भी सकते हैं, मना भी कर सकते हैं. We can ask, we can give, or we can refuse the permission, or we can take a permission in could, but the reply must be in can, whether positive, either positive or negative. जवाब अगर could का देना है पॉजिटिव नेगेटिव से, तो आप कैन से दे सकते हैं. लाइक आई सेड कुड आई कम इन, मैं बताऊं यस यू कैन या सॉरी यू कांट. सही जी, रिमेंबर दिस. अच्छा, I'm talking about, in talking about the past, we use could that somebody had a permission to do something in a German permission, so we do not use could to talk about the permission on the particular occasion. We use अगर पास्ट में आपको किसी चीज की इजाजत थी, जब भी आपने चाहा कुछ कर लिया, so you can use that when I was a child I could watch TV whenever I wanted. मैं जब छोटी थी, जब मैं जब चाहती थी टीवी देख सकती थी, so that was the past permission. It means you were allowed, like allowed to. Like I said, when I was a child, I was allowed to watch TV whenever I wanted. Yesterday evening, Peter was allowed to watch TV for an hour. अगर पास्ट में कोई चीज आपको अलाउ थी, आपको परमिशन थी किसी काम करने के लिए, so you can use could.
Like I said, I could play any game I wanted, or I was allowed to play any game I wanted. Like I said, I could stay out of my home, or I was allowed to stay out of my home. मुझे इजाजत थी इस बात की कि मैं अपने घर से बाहर रह सकता था. So remember this, we can use could for the past permission. कि पास्ट में मैं कुछ काम कर सकता था, मेरे पास परमिशन थी ऑन द पर्टिकुलर ओकेजन, ऑन द पर्टिकुलर एक्शन. लाइक पीटर कुडंट. अच्छा, अगर पास्ट में कोई परमिशन नहीं थी ऑन द पर्टिकुलर ओकेजन, लाइक could not talk about the on particular occasion was not allowed. Like I said, Peter couldn't watch TV yesterday because he was so naughty. उसको इजाजत नहीं थी, or he was not allowed to. Peter was not allowed to watch TV. Like I said, I was not allowed to go, or I couldn't go outside when I was a child. Okay, we can use could or was allowed to. Both we can use as a similar. There is no difference between could or was allowed to. But was allowed to is more specific rather than could. Okay. Achha, we can use can for an offer as well. Like I said, can I carry your bag? Like I'm giving you offer. क्या मैं आपका बैग उठा लूं? मैं बोलता हूँ, oh, thank you very much. We use can when we are offering people to do things. Like I said, can I cook something for you? That's an offer. क्या मैं आपके लिए कुछ पका लूं? है ना? Like I said, I can drop you home. No problem. मैं आपको घर छोड़ सकता हूँ. That is the offer. I said I can revise this topic if you want. That is the offer. Offer means in Urdu पेशकश. Whenever you are giving a some offer. अच्छा, we can use could as well for the offer. I said I could carry your bag. है ना? When you are, मैं आपका बैग उठा सकता हूँ. You can use can and could both for the offer in the present, not in the past. Can we can use for the offer and could we use also for the offer in the present. Guys, I said I can drop you or I could drop you home if you are getting late. अगर आप लेट हो रही है तो मैं आपको घर छोड़ सकता हूँ. So remember this, we can use can and could for the offer as well. Can and could we can use for the permission. Can and could we can use for the offer whenever you are offering. Like I said, I can bring you a chair or can I bring you a chair. मैं आपके लिए कुर्सी ले आता हूँ. That is a, I can bring taxi for you or can I bring taxi for you or can I carry your bag. That is the offer. I said okay, I can revise the topic. That is the offer as well. Okay, we can use can for the request as well. Can को हम request के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं. Like I said, can you help me? We use can and could to ask and tell people to do things. Could is more polite and less definite and often making a suggestion. Like, है ना? Can you help me? You use करेंगे. Remember this. We use you in the request. Can you help me? Can you put the children to the bed? Could you lend me £5 until tomorrow? क्या आप मुझे £5 दे सकते हैं कल तक के लिए? Can you push my car? Yeah, could you push my car? Can you help me? Can you guide me? Can you drop me at home? Can you cook something for me? Can you guide me? Could you guide me? These all are what? These all are request. Can I is a permission or offer, or can you is a request. अगर request करनी है, you can use can and could both. Can is informal and could is formal. Like I said, can you drop me or could you drop me home? That is a request. Or can I come? That is a permission. Or I can carry your bag or can I carry your bag? That is the offer. I said, can I revise or I can revise this topic? That is the offer. So remember, can and could have an interpersonal usage. These are called interpersonal usage. Achha, yesterday I told you we can use have, could have for the criticism in the past or in the present. Criticism means तनकीद कर सकता हूँ. मैं बताऊँ, you could ask me before borrow my car. आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरी गाड़ी ले जाने से पहले. Or in the past, I said you could have told me. आप मुझे बता सकते थे. That's mean you didn't tell me. That is the criticism. अगर आपने किसी को criticize करना है for the past
You said, okay, you could have helped me, you could have appointed me. So that is the past criticism. Or in the present criticism, you could, है ना, actually you could tell me, आप मुझे बता सकते हैं. That is the criticism in the present. You could ask, you could inform me, आप मुझे बता सकते हैं. Usually we are using criticism for the present. क्योंकि लोग ऐसा काम नहीं कर रहे. Good can be used to criticize people for not doing things. है ना, यानी आपने कोई काम नहीं किया, मैं उसको criticize करता हूँ. मैं बताऊँ, you could revise your lesson. What have you been doing? So this is the criticism. मैं बताऊँ, आप अपना lesson revise कर सकते हैं. What have you been doing? आप क्या कर रहे हैं? Because I've taught you everything. You could revise. You could ask any question. You could improve yourself. Okay. That is can and could. We are using can for ability. Oh, sorry. Can for asking and giving and refusing permission. Can and could we are using for offer. Can and could we are using for request. These are called interpersonal usage. अच्छा, there is another use of can't help. यानी जब आप कोई काम करे बगैर नहीं रह सकते. It means can't help doing. It mean you cannot control yourself from doing something. Like I can't help speaking English. मैं English बोले बगैर नहीं रह सकता. So that is also a one structure of can't help. Like I said, he can't help smoking. वो cigarette पिए बगैर नहीं रह सकता. Or in the past he couldn't help smoking. वो cigarette पिए बगैर नहीं रह सका था. So we can use can't help and couldn't help when you cannot control yourself from doing something, or when you cannot stop yourself from doing something, even though you are being careful, or you shouldn't try not to. यानी आप कोशिश भी कर रहे हैं कि मैं ये काम छोड़ दूं, लेकिन आप छोड़ नहीं पा रहे, तो you can use can't help structure. Like I said, I can't help speaking, I can't help teaching English. मैं बोलता हूँ यार मैं इंग्लिश पढ़ाए बगैर नहीं रह सकता. It's mean I'm very used to it. It's a part of my life now. Okay, that is can and could. Can we are using, remember we are using can for ability, we are using can for possibility, impossibility, criticism, unrealizability, and the past possibility with a could have plus third form. Yesterday I taught you. So you have to remember all the usage of can, because can we can, or we can use can for the could for the present possibility or the future probability. Like a war could start any day, jang kisi din bhi chhid sakti hai, petrol price could go higher again, or in the present as well. He could be sick, present possibility, ho sakta wo bimar ho, when we have a doubt. Okay, these are the usage of can and could. Let's move toward may and might. Yesterday I already taught you can in detail, and could you as well. So let's move to the may and might. Okay, first of all, may and might do not take, may and might, they do not take S form. There is no third person singular form, like she may be there tomorrow, or it might rain this afternoon. Question and negative are made without do. Question और negative अगर बनेंगे तो वो बगैर do के बनेंगे, बगैर does के बनेंगे. May I help you? और we might not be home before midnight. After may and might we do not use to form. अब may और might के साथ infinitive use नहीं करते, to form हम लोग use नहीं करते. Like you may be right, ये नहीं हो सकता, you may be too right. That is wrong. She might not want to come with us. Okay. We can use in a progressive and a perfect form as well. They are also possible. Why hasn't she come? She might be working late. हो सकता है वो देर तक, शायद वो देर तक काम कर रही हो. In a continuous form, you can use also may and might. She didn't say hello. She may not have recognized you. उसने hello नहीं कहा, शायद उसने आपको नहीं पहचाना था. Past के लिए भी use कर सकते हैं. Do you think we might ask for some opinion? See, that is how we can use. अच्छा, we cannot use ing and ed form with made. May cannot be made, or might cannot be mighting or mighted. We do not exist. When necessary, we use other word. अगर हमें may और might के साथ कुछ और use करना पड़ रहा है, like I said, she wants to be allowed to open a door, so we can use other things. Like a may के साथ अगर आपको मजबूरी लगानी पड़ रही है, so you can use may have to. और ability लगानी पड़ रही है तो can नहीं लगा सकते, उसका alternative might be able to or might have to. अगर मजबूरी लगानी पड़ रही है like a must, so we can use alternative as well. सही जी. may जो है वो might का past नहीं है.
Might does not normally have a past meaning. May or might both are the same. Might have more probability and more possibility. May and might have a little difference. You can say when the 70% chances are there, so we are using might, and 30% chances are there, we are using may. May and might both are same. Both we are using for the possibility. Okay. Acha, may or might we can convert into a continuous, we can convert into a perfect as well. Maybe plus ing form we can convert into ing form, or may have plus third form we can convert into the perfect form. May and might are used mainly to talk about the possibilities. May और might किसकी बात करते हैं? Possibility और chances की of something is happening, जो हो रहा हो या हो गया हो या होगा in future. And to ask and give permission, और इसमें हम permission ले भी सकते हैं और दे भी सकते हैं. Like I said, may I come in? I said yes, you may. May and might we are using for chance, like something is possible. We often use may and might to say there is a chance that something is true, and that is there a possibility of something is happening. I think Labour are going to win. You may be right. It is possible that you are right. Suppose that I'm talking about anything. I said that Pakistani team is going to win. You may be right. We may go climbing to the hill next summer. शायद हम जाएं. It's not sure. I'm talking about the possibility. So whenever you are talking about the possibility, you can. ये ना मतलब होता है शायद मैं कल class लूं, तो मैं क्या बोलूँगा? I may take class tomorrow. It's mean I'm not sure, or I might take class tomorrow. It's mean I'm not sure. I might get a job soon. है ना? हो सकता है मैं होता शायद मुझे जल्द जॉब मिल जाए. You might be needed at the office on Sunday. मतलब शायद तुम्हारी जरूरत हो ऑफिस में. May and might both are the same, but there is a little bit difference in it. Might is used. May we are, sorry, I told you perhaps I may go to London tomorrow, perhaps at a 50% chance. Or Joey might come with us 30% chance. Agar chance 50% hai, then we are using may. If the chances are the 30%, then we are using might. This all about the possibility and chances. When the chances is more, we are using may. When the chances are less, we are using might. Like I might take class, less chances, more chances, I may take your class, 50-50%. Okay, might is used as a fast form of the way both may and might are used to talk about the present or future. May और might को हम present और future के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं. Might is mostly used for the less definite. Might को हम use करते हैं जब chances और कम हो. And more hesitant the may. May में chances ज़्यादा होते हैं. Might में chances और कम होते हैं. When we use people or something as possibility or likely to, यानी कोई चीज की जब possibility हो, whenever we are talking about the possibility, so we are using may and might. Remember this. What is may and might? अच्छा, may और might से हम सवाल नहीं बना सकते. We cannot make a question. है ना? मैं बताऊं क्या कल बारिश होगी? We cannot make. है ना? What we will do in that condition? We use likely to. है ना? जैसे आप बोलते मैं होता हूँ क्या कल शायद बारिश होगी, तो क्या होगा? Is it likely to rain tomorrow? May we do not use in question for possibility. May we are asking a question for permission. May I come in? That is possible. But I cannot say may it rain tomorrow. That is wrong. Are you getting? If there is a question, we cannot use may in the question of possibility का question हम नहीं पूछ सकते. Like I said, are you likely to go campaign this summer? क्या शायद आप इस समर कैंपेन पे जाएंगे? ये नहीं पूछ सकता. May you go camping this summer? That is wrong. Possibility के अंदर and probability के अंदर we cannot use may in a question. Sir, Okay. जी. sir, can we say the weather is change might be tomorrow? No, weather may change. is नहीं आएगा. We cannot use is. शायद change हो जाए. Possibility, इम्कानात. The weather might be changed tomorrow. Might change आएगा. B के साथ action वर्ग नहीं आ सकता.
The weather Okay, may sir. change. The Okay, sir. weather may change tomorrow. शायद बदल जाए. Sir, video Whenever we not are have what? screen not visible. Because the screen. Okay, wait. Now may might and could. Okay, you can see I have shared the screen. May might could Sir. and would. सर इस तरह जुमला नहीं बन सकता कि मे आई गो टू स्कूल. जी हाँ, बन सकता है परमिशन में, लेकिन पॉसिबिलिटी में नहीं बन सकता. वी कैन नॉट मेक एन पॉसिबिलिटी. हाँ, परमिशन यू कैन यूज. मे आई गो टू स्कूल. यस आई यूज एज्यूम में. मे को हम परमिशन में बना सकते हैं, बट वी कैन नॉट मे यूज इन द पॉसिबिलिटी में सवाल नहीं बना सकते हैं, यानी इम्कानात में. जैसे मैं बोलता हूँ आई एम लाइकली आर यू लाइकली टू कम टुमारो. क्या कल शायद आप आएंगी. आर यू लाइकली टू टेक क्लास टुमारो. ये बनेगा. ये नहीं हो सकता मे आई टेक क्लास टुमारो. जी नहीं, दैट इज नॉट पॉसिबल. पॉसिबिलिटी में हम लोग नहीं बना सकते. अच्छा, वी कैन यूज मे माइट नॉट इन नेगेटिव. कैन नॉट और मे नॉट में फर्क क्या है. कैन नॉट का मतलब है इम्पॉसिबल. मे नॉट का मतलब है 50-50. आई सेड like no difference between may and might not and cannot. What does it mean? I said it may rain or he may be at home. शायद वो घर पे हो. और he might be at home 50-50. और he can't be at home. Impossible. हो ही नहीं सकता वो घर पे हो. It's not possible और that is not true. ये बात सच है ही नहीं, हो नहीं सकता. मैं बोलता हूँ शायद सड़कें गीली हैं, तो मैं बोलता हूँ रोड्स माइट बी वेट और मे बी वेट. लेकिन अगर मैं बोलता हूँ सड़कें गीली हो नहीं सकती, तो मैं क्या बोलूंगा. रोड्स कांट बी वेट. इम्पॉसिबल. सही जी. अच्छा, may can be used talk about the typical occurrence. Things can happen in a certain situation. यानी किसी मखसूस सिचुएशन में मखसूस चीजें हो सकती हैं, तो भी हम may लगाते हैं. This is common in a scientific and academic language. Might is not used in that way to talk about. अच्छा, might use नहीं होगा, might use भी होगा तो वो पास के सिचुएशन में होगा. यानी किसी टिपिकल और सर्टेन सिचुएशन के अंदर मे भी यूज कर सकते हैं. जैसे मैं बोलता हूँ आफ्टर हैविंग अ बेबी अ वुमन मे सफर फ्रॉम डिप्रेशन फॉर सेवरल मंथ्स. है ना, यानी बेबी होने के बाद हो सकता है उसको कुछ अरसे डिप्रेशन रहे. मे मींस अ टिपिकल अ सर्टेन सिचुएशन. किसी खास सर्टेन सिचुएशन में कोई खास चीज हो जाए तो हम वहां भी मे लगा सकते हैं. द फ्लावर मे हैव 5 or 6 पेटल्स. है ना, मतलब शायद हो 6 से 7 पत्तियां. कलर में बी ऑरेंज और लाइट इन द पिग टू डार्क. यानी किसी आई एम टॉकिंग अबाउट अ सर्टेन सिचुएशन. क्या चिल्ड्रन ऑफ डिवोर्स चिल्ड्रन मे हैव डिफिकल्टी इन फॉर्मिंग अ स्टेबल रिलेशनशिप देमसेल्फ. यानी वो बच्चे जिनके वालिदैन का डिवोर्स हो गया है, शायद उनके अंदर डिफिकल्टी हो रिलेशनशिप बनाने में. तो मे को हम लोग स्पेसिफिक सिचुएशन यानी सर्टेन सिचुएशन के अंदर भी मे को हम यूज कर सकते हैं. यूजुअली थिंग्स आर साइंटिफिक और एकेडमिक लैंग्वेज में, बट दीज आर वेरी लेस यूजेज. बट आई एम टेलिंग यू इट कुड हैपन. ऐसा भी हो सकता है. अच्छा, मे और माइट की जगह परहैप्स भी यूज कर सकते हैं. लाइक आई सेड परहैप्स आई विल टेक क्लास टुमारो और आई मे और आई माइट टेक क्लास टुमारो. मे बी को आप जुमले के शुरू में भी दे सकते हैं. मैं 1 minute प्लीज. Yeah, speaking. QCCA. Okay. QCCA. QCCA. What problem are you facing now? Regarding what? You got a login problem? Okay, then. Okay. So what problem are you facing now? Okay, you need a new user account. Okay, new user account. Okay, you want a new user account. You want to create it. Okay, I'll ask my engineer to get that. Okay. Sorry for interference and disturbance. I had a cold, that's why I had to take it. Okay. May and might we are using from what?
remember this may and might we are using for possibilities. Okay, may and might we are using possibilities whenever something is possible. Might has a 30%, may has a 50% chances. So you need to know this. Okay. अच्छा, we can use may and might in the continuous form as well. may और might को हम continuous form में भी use कर सकते हैं. क्या करेंगे? may be plus might be plus ing form, है ना? मैं बोलता हूँ it might be raining, शायद बारिश हो रही है. I said you may be getting my point. शायद आप मेरी बात समझ रही हो. सही जी. May or might को we can convert into the continuous form as well. Like I said, it may be raining, she may be playing, they may be coming. It's mean शायद, like perhaps they are coming or perhaps they are sleeping. She may be sleeping, she may be working, she may be, it may be raining, it may be something is happening. So we are using may or might in the continuous form as well. May or might को हम continuous form में भी use कर सकते हैं. Like you may be, it may be true. We can use in the present and the past, present or the future. Or I said it may be true. शायद ये सच हो. Or I may come tomorrow for the future. शायद मैं कल आऊं. I may not come tomorrow. शायद मैं कल ना आऊं for the negative as well. It might not be raining. शायद बारिश नहीं हो रही है. Or it might be raining. She might be sleeping. They might be working hard, or they may be working hard, or they may not be working hard. See, we can use may and might for the continuous form as well. Or we can use in the present and the future. Like I may come tomorrow, we can use for the future. Okay, are you getting my point? All of you? Yes, sir. This is the may and might. Yes, sir. May or might, you need to know. This is may and might. अच्छा, may and might we can use for the past as well. अब past के लिए कैसे use करेंगे? May plus might plus have plus third form. May, might, have plus third form we can use the past. अगर आपने past use करना है may और might का, then have लगा दें. Use have. Okay. To say that something happened or was true in the past. यानी कोई चीज माजी में शायद सच थी या शायद हुई थी, तो आप कैसे बताएंगे? मैं बोलता हूँ Polly is very late. She may have missed the train. मैं बोलता हूँ Polly बहुत लेट हो गई है, शायद उसकी ट्रेन निकल गई होगी. For the past. अगर आपने past की possibilities की बात करनी है, so you can use may, might, have plus third form. The past possibilities. यानी past chances या माजी में chances ऐसा हो सकता था कि ऐसा हो गया हो. Okay. I think I taught you everything you might have forgotten. मैं बोलता हूँ मैंने आपको सब कुछ पढ़ाया था, शायद आप भूल गई हैं. It's mean I'm talking about something was true or something happened, it was true in the past, or it was possible, or there was a chances in the past as well. Like I said, you were stupid, try climbing up there, you might have killed yourself. है ना? मैं बोल रहा हूँ यार तुम बेवकूफ के ऊपर चढ़ गए, तुम शायद गिर सकते थे या अपने आप को मार सकते थे, है ना? If she had been so bad temper, I might have been married her. है ना? अगर वो बोलते हैं इतनी वो बददिमाग नहीं होती तो शायद मैं उससे शादी कर लेता. That is a conditional sentence. We can use it conditional as well. May and might have a perfect refer to the present or the future. Like I'll try phoning him. मैं उसको फोन करने की कोशिश करूंगा, but he may have gone by now. अच्छा, हम may और might को आने वाले वक्त की prediction के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं. जैसे मैं बोलता हूँ 10 बजे तक शायद क्लास खत्म हो चुकी हो, तो मैं क्या बोलूंगा? क्लास may have been finished by 10 o'clock. अगर आपको फ्यूचर की प्रेडिक्शन में पेशन गोई करनी हो विद अ डाउट,
और चांसेस आ रहे हो तो आप कह सकते हैं ना, मैं बोलता आई ट्राई टू फोन हिम, मैं उसे फोन करने की कोशिश करूंगा, बट ही मे हैव गॉन आउट बाय नाउ, लेकिन हो सकता है अब वो बाहर जा चुका होगा या है। बाय द एंड ऑफ दिस ईयर आई माइट हैव सेव मनी, इस साल के आखिर तक शायद मैं कुछ पैसे बचा चुका हूँ। तो मे माइट हैव फ्यूचर की पॉसिबिलिटी को भी बयान करता है, जबकि ये है पास्ट का, लेकिन फ्यूचर का टाइम लग जाएगा, तो ये फ्यूचर की प्रोबेबिलिटी को भी बयान करता है, पॉसिबिलिटी को भी बयान कर सकता है। ये आपको पता होना चाहिए, यू नीड टू नो दिस। कैन is not talk about the affirmative clause to talk about the chances. Something is actually will happen or will happen. It is possible to express the meaning. We use may, might and could to talk about a more general theoretical kind of possibilities. अच्छा, अगर हमने possibilities की बात करनी है तो हम can को इस्तेमाल नहीं करते, या तो may, might या could को। जैसे मैं बोलता हूँ there may be a strike next week, है ना, मैं बोलता हूँ कि हो सकता है या शायद अगले हफ्ते हड़ताल हो, so we cannot use can over here. I may fly to Amsterdam on Tuesday. शायद मैं जाऊं। सही जी। अच्छा, हम पॉसिबिलिटी का सवाल जो है वो कैन में कर सकते हैं, लाइक हाउएवर द क्वेश्चन एंड नेगेटिव clauses can make used to talk about the present possibility, especially the question whether something is logically possible. अगर कुछ चीज लॉजिकली पॉसिबल है, हम लोग उसका सवाल कैन में कर सकते हैं, लेकिन उसकी पॉसिबिलिटी नहीं बना सकते, उसकी पॉसिबिलिटी हम कुड में या माइट में बनाएंगे। यू नीड टू रिमेंबर दिस। लाइक कैन डैड बी माइक, क्या ये माइक हो सकता है? आई थॉट ही वाज इन ग्रीस, मैंने सोचा शायद वो ग्रीस में था। जेड इज गेटिंग मैरिड, ही कैन, यू कांट मीन इट, तुम्हारा ये मकसद नहीं हो सकता है ना। जैसे मैं पूछता हूँ वो कहाँ हो सकता है, तो हम लोग इसमें कैन यूज कर सकते हैं, वेयर कैन ही बी। कुड इज ऑफन यूज इन द सिमिलर वे। अच्छा, कुड को भी हम बिल्कुल मे और माइट की तरह यूज कर सकते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ शायद मैं कल आऊँ, हो सकता है मैं कल आऊँ, तो आई सेड आई मे कम टुमारो, आई माइट कम टुमारो, और आई कुड कम टुमारो। सही जी, दैट इज हाउ वी कैन यूज मे एंड माइट। मे एंड माइट यूजुअली वी आर टॉकिंग अबाउट द चांसेस एंड पॉसिबिलिटीज। सही जी। अच्छा, सेकंड वी आर यूजिंग मे एंड माइट फॉर गिविंग एंड आस्किंग परमिशन। हम मे को यूज करते हैं, माइट को यूज नहीं करते, रिमेंबर दिस। ओके, लाइक आई सेड मे आई कम इन, तो मैं कह सकता हूँ यस यू मे। मे एंड माइट बोथ कैन बी यूज फॉर आस्किंग परमिशन, बट देर आर मोर फॉर्मल कैन एंड कुड। कैन एंड कुड ज्यादा फॉर्मल, माइट इज वेरी पोलाइट एंड फॉर्मल, बट इट इज नॉट कॉमन मोस्टली। सही है जी। माइट को हम इस्तेमाल नहीं करते, हम कैन और कुड से भी सवाल कर सकते हैं, और हम मे से भी सवाल कर सकते हैं, लेकिन हम माइट से सवाल नहीं करते। इट्स नॉट वेरी कॉमन। लाइक आई सेड मे आई कम इन, मे आई आस्क यू अ पर्सनल क्वेश्चन, तो आप जवाब में भी कह सकते हैं यस यू मे या यू मे नॉट। आई सेड मे आई आस्क एनी क्वेश्चन, आई सेड यस यू मे, और सॉरी यू मे नॉट, या ऑफ कोर्स यस ऑफ कोर्स यू मे। तो मे को आप क्वेश्चन में भी यूज कर सकती हैं, रिफ्यूजिंग के लिए भी यूज कर सकती हैं, और एक्सेप्टेंस के लिए भी यूज कर सकती हैं, है ना। लाइक यू कैन आस्क से मे आई आस्क एनी क्वेश्चन, मैं बोलता हूँ यस यू मे, मैं बोलता हूँ सॉरी यू मे नॉट, सो आई कैन रिफ्यूज नॉट विद मे नॉट, और आई कैन एक्सेप्ट विद मे, और आई कैन आस्क द क्वेश्चन विद मे इन द परमिशन। पॉसिबिलिटी में मे नहीं आएगा सवाल में, वो लाइकली टू यूज करना पड़ेगा। आर यू लाइकली टू कम टुमारो, क्या कल शायद आप आएंगे, क्या कल आप शायद क्लास लेंगे। अच्छा, हम डायरेक्ट रिफ्यूजल भी कर सकते हैं, मैं मना भी कर सकता हूँ, मैं बोलता हूँ स्टूडेंट मे नॉट आस्क एनी क्वेश्चन व्हाइल आई एम टीचिंग। सही है जी। मैं डायरेक्ट मना भी कर सकता हूँ विदाउट आस्किंग, आपने नहीं पूछा लेकिन मैंने मना कर दिया, स्टूडेंट मे नॉट आस्किंग, या स्टूडेंट मे नॉट पार्क इन स्टाफ पार्किंग, स्टूडेंट मे नॉट पार्क हियर, है ना, लाइक आई कैन नॉट पार्क हियर। दीज आर रादर फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। अच्छा, इनफॉर्मल में आप कैन और कैन नॉट भी यूज कर सकते हैं। मैं बताऊँ यू कैन नॉट पार्क हियर और यू मे नॉट पार्क हियर। मे नॉट इज मोर फॉर्मल, और यू मे नॉट सिट हियर और यू कांट सिट हियर, आप यहाँ नहीं बैठ सकते, बोथ आर द उर्दू इज सेम, but the may not is a formal and may is informal. Acha, if we do not use may or might talking about the permission which has been given. अच्छा, जब परमिशन अगर हमने दे दी हो तो हम may और might को यूज नहीं करते, हम ज्यादातर can और could को यूज कर सकते हैं। Like I said, you can ask any question or you are allowed to ask any question if the permission has already been given, or the rules and laws, instead you can use could, can, could or be allowed to, है ना।
We do not use may or might to talk about the permission which has already been given or refused. अगर कोई परमिशन दे दी गई हो या मना कर दी गई हो तो हम may not को इस्तेमाल नहीं करते. हम लोग फिर then we are using can, could or be allowed to. Like I'm giving you one sentence. These days children can't or are allowed to do what they like. यहाँ पे may हम लोग यूज नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ परमिशन पहले ही दे दी गई है. जहाँ परमिशन पहले ही दे दी गई है रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से तो वहां पे हम कैन और बी अलाउड टू इस्तेमाल करते हैं. लाइक आई सेड आई कुड और आई वाज अलाउड टू रीड व्हेन आई वाज अ चाइल्ड. यहाँ पास में मुझे परमिशन दे दी गई थी. और कैन यू और आर यू अलाउड टू पार्क ऑन द बोथ साइड ऑफ द रोड. क्या आपको इजाजत दे दी गई है रोड के दोनों तरफ पार्क करने की. ओके, दैट इज हाउ वी कैन यूज. जब परमिशन दे दी गई हो तो हम मे और माइट को यूज नहीं कर सकते. हम कैन, कुड और बी अलाउड टू को यूज कर सकते हैं इन प्रेजेंट पास्ट. यू नीड टू रिमेंबर दिस. दीज आर द बेसिक यूजेज आई एम टेलिंग यू. अच्छा, मे को हम लोग और यूज करते हैं. मे आर वी आर यूजिंग फॉर विशेस एंड होप, है ना. जैसे मैं बताऊं मे यू लिव लॉन्ग, मेरी दुआ है कि आप लंबे अरसे जिए. सो वी कैन ऑल्सो यूज मे ना. मे यू लिव लॉन्ग, मे यू गेट अ बेटर जॉब, मे यू गेट हेल्दी. मेरी दुआ है कि आप सेहतमंद हो जाएं. मे यू स्पीक इंग्लिश वेल, मेरी दुआ है कि आप अच्छी इंग्लिश बोलें. मे गॉड बी विद यू. सो मे को जुमला हम डायरेक्ट शुरू कर सकते हैं दुआएं देने के लिए या विशेष करने के लिए और अच्छी होप उम्मीद करने के लिए. ओके, मे इज यूज अ फॉर्मल एक्सप्रेशन टू विशेस एंड होप. जब हमने किसी को दुआ देनी है तो हम क्या करेंगे, मे को शुरू में ले आएंगे और यू लगा देंगे. और ही भी लगा सकते हैं, शी भी लगा सकते हैं. वी कैन चेंज एनी प्रोनाउन. मे यू लिव लॉन्ग, मे यू गेट बेटर जॉब. सही जी. आप दुआ देने के लिए भी किसी को इस्तेमाल कर सकते हैं. मे शी रेस्ट इन पीस, जब किसी का इंतकाल हो जाए तो आप उसके लिए भी दुआ कर सकते हैं. प्रेयर फॉर द डेड पर्सन. मे गॉड बी विद यू, मे गॉड हेल्प यू, मे यू गेट बेटर जॉब, मे यू स्टे हेल्दी. है ना, मेरी दुआ है आप हमेशा क्या रहें, सेहतमंद रहें. तो हम लोग मे और माइट को वहां भी यूज कर सकते हैं. तो ये दीज आर द. मे माइट कितने यूज होगा. नंबर 1 पॉसिबिलिटी, नंबर 2 परमिशन और नंबर 2 गिविंग एंड रिफ्यूजिंग परमिशन, नंबर 3 विशेस एंड होप. नंबर 1 पॉसिबिलिटी और इम्पॉसिबिलिटी फॉर द प्रेजेंट एंड पास्ट और रनिंग present continuous or the present simple or the past simple. Possibility and chances. And this is all about the may and might because time is very less. Yes, Miss Manisha, what is your question? Sir, in a daily basis, which language we have to use, informal or a formal? Which It is depends on the better? person. Which is person depending. If the person you know very well, use informal. If the person you don't know very well, like your boss or like a stranger, use formal language. Ma'am, Like I sir, said, whenever we are talking usually we to are a native usually we speaker are or using informal more because the thing is that daily we are talking to the person which we already know. That is why we are using informal more than formal, because maybe you're talking to your boss for a very less time, but you are talking the person you know. You are talking to more than your family members, friends. Usually we stick to the informal. We not use formal sir, because the formal. if we are in a meeting or if we are in an interview, so we have to use a Definitely. formal language. Yeah, definitely, because you don't know, you are not very close to that Okay. person. That is why. Okay, अच्छा sir. जी, Okay, next sir. next we have would. अच्छा जी, would क्या है? Would is very important. Usually people are very much confused about the would. Okay, how to use would and where the would is used. अच्छा, would is just like a will. Would is the softener form of will. In New English, would is an alternate of will. जैसे मैं कहता हूँ I will come tomorrow, तो मैं उसकी जगह in place of would, will, I can use would. I would come tomorrow. Same. Maybe there is no explanation regarding would. So would जो है, जो would आ रहा है, the would is coming just like a will nowadays. हम will की जगह would को इस्तेमाल कर सकते हैं as a softener whenever we want to become more soft. So I said, would you help me or will you help me? Will you drop me at home or would you drop me at home? Would your daughter like to play with my little girl, or will your daughter like to play with my? Both are possible. अच्छा, would के आगे remember this, there is no s form, there is no ed form,
सही है। would is often similar ways to will. Remember this. would जो है वो क्या है? It's just like a will. In new English, people are very much confused in new English how to use would. would क्या कर रहा है? Just functioning like a will. It can act the past of will. अच्छा, would जो है वो will का past भी बन जाता है. So would we are using in the past, and would we are using in the present, and would we are using in the future as well. We are using in all times, in present, past or future. We can use would in the present, past or future. Okay, remember this. Would is a softener form and less definite form of the will. सही जी। अच्छा, will को हम सबसे पहले यूज कहाँ करते हैं? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हम क्या करते हैं? will की जगह would लगा देते हैं। अगर आप उसको कन्वर्ट करें, जैसे मैं बोलता हूँ टुमारो विल बी फाइन, तो अब मुझे इसको अगर इनडायरेक्ट में करूंगा तो मैं क्या कहूंगा? द फोरकास्ट सेड द नेक्स्ट डे वुड बी फाइन, टुमारो की जगह नेक्स्ट डे आ जाएगा। तो जब भी हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो विल की जगह जो है फिर वो वुड कन्वर्ट में हो जाता है ना। जैसे मैं बोलता हूँ ही विल कम टुमारो, अब इस विल को अगर मैं इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करूंगा, मैं ही सेड आई वुड कम टुमारो। अब विल जो है वो वुड में कन्वर्ट होता है। नंबर 1 डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, ये आपको पता होना चाहिए। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। अच्छा, एक होता है फ्यूचर एंड पास्ट, यानी माजी के अंदर मुस्तकबिल की बात करें। मैं बोलता हूँ यार तुमने कहा था कि तुम आओगे, तो मैं क्या बोलता हूँ? यू सेड यू वुड कम। तो वुड हम लोग कहाँ यूज करते हैं? whenever we are talking about the future in past। जैसे मैं बोलता हूँ ना, मैं खेलने वाला था और मैं खेलता, आई वुड प्ले इफ आई हैड अ चांस ना, अगर मेरे पास चांस होता। would is also used to express the idea of future in past to talk about a past action which had not happened at the time we are talking about। यानी हम माजी में उस वक्त की बात कर रहे हैं जिस पर वो काम मुकम्मल नहीं हुआ था। जैसे मैं कहता हूं कि मैं दरवाजा पेंट करता लेकिन बारिश शुरू हो गई, तो इसका मतलब वो काम उस वक्त मुकम्मल नहीं हुआ था। मैं बोल रहा हूँ मैं दरवाजा पेंट करता लेकिन बारिश शुरू हो गई थी, इसका मतलब ये बात क्या है? पास्ट के अंदर फ्यूचर बन गई, क्योंकि ये काम अभी तक उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हुआ था। सो व्हाट आई सेड, आई वुड पेंट द मेन डोर बट द रेन स्टार्टेड। सही जी। जब भी हम फ्यूचर को पास्ट के अंदर फ्यूचर लाएंगे तो हम वुड को इस्तेमाल कर सकते हैं, विल को तो नहीं कर सकते, जाहिर बात है पास्ट में। तो जो पास्ट के अंदर फ्यूचर की बात होती है कि मैं आपको फोन करने वाला था, तो मैं क्या बोलता हूँ? आई वॉज गोइंग टू कॉल यू या आई वुड कॉल यू, मैं आपको फोन करता। इसका मतलब मैंने उस वक्त तक आपको फोन नहीं किया था, है ना। मैं बोलता हूँ ना मैं जॉब छोड़ने वाला था या मैं जॉब छोड़ देता, इसका मतलब मैंने छोड़ ही नहीं दी उस टाइम। तो मैं बोलता हूँ आई वुड लीव दैट जॉब या आई वॉज गोइंग टू लीव दैट जॉब। तो दिस इज कॉल्ड द पास्ट इन फ्यूचर। जब हम फ्यूचर के अंदर पास्ट की बात करेंगे तो हम ऐसे ही कर लेंगे। एक जुमला और मैं आपको देता हूँ। इन बर्लिन शी फर्स्ट मेट अ वुमन, वो बर्लिन में एक औरत से मिला। ही वुड वन डे मैरी, उससे वो एक दिन शादी करता। यानी पास्ट के अंदर वो फ्यूचर की बात कर रहा है कि उसने उस वक्त शादी नहीं की थी, कि वो औरत से मिला जिससे वो शादी करता, लेकिन उस वक्त तक उसका मतलब उसने शादी नहीं की थी। इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द पास्ट इन फ्यूचर, फ्यूचर इन पास्ट, यानी पास्ट के अंदर हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं। लाइक आई सेड देयर वाज अ चांस दैट माय लेटर वुड अराइव इन टाइम, यानी मौका था कि मेरा लेटर वक्त पर आ जाता। इसका मतलब ये काम उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हुआ था। सो वुड को हम डायरेक्ट एंड डायरेक्ट में यूज करते हैं। वुड को हम विल की जगह फ्यूचर में भी यूज कर सकते हैं। लाइक विल यू कम टुमारो, आई विल कम टुमारो, आई वुड कम टुमारो, बोथ आर सेम। वुड इज लिटिल सॉफ्टनर, विल इज लिटिल मोर श्योरिटी। विल में ज्यादा श्योरिटी है, विल में थोड़ी सी लेस श्योरिटी है, बट बोथ आर करेक्ट, वी कैन बोथ यूज फॉर द फ्यूचर। अच्छा, वुड को हम इंटरपर्सनल यूजेस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं विल की जगह। जैसे मैं बोलता हूँ विल यू हेल्प मी, इसकी जगह आप लगा दें वुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करेंगे, है ना। मैं तो विल यू ड्रॉप मी एट होम, वुड यू ड्रॉप मी एट होम, एक ही बात है, बोथ आर द सेम, है ना। वुड इज अ लेस सॉफ्टनर फॉर्म ऑफ विल, यानी अगर आपने और नरमी शो करनी है तो विल की जगह वुड लगा दें, है ना। मैं बोलता हूँ आई वुड टेक योर क्लास टुमारो और आई विल टेक योर क्लास टुमारो, एक ही बात, बोथ आर द सेम। वो थोड़ा सा मैं लेस सॉफ्टनर हो रहा हूँ, उसमें मैं विल में थोड़ा सा हार्ड हूँ।
सही है जी, दैट इज हाउ आई कैन यूज वुड। अच्छा, वुड के साथ हम मैं और भी कुछ सकता हूँ, मैं बताऊँ, वुड यू लाइक टू, वुड यू लाइक टू टेक टी। वुड के साथ हम ये भी लगा सकते हैं कि आप चाय पीना पसंद करेंगे। और वुड यू प्रेफर टू टेक टी, क्या आप चाय पीने को तरजीह देंगे, है ना। मैं बोलता हूँ वुड यू लाइक टू आस्क एनी क्वेश्चन, नरमी के साथ, क्या आप कुछ सवाल पूछना चाहेंगी। या वुड यू प्रेफर टू टेक ग्रामर क्लास, क्या आप ग्रामर क्लास को लेने में तरजीह देंगी। सही है जी, दैट इज हाउ वी कैन यूज वुड एज वेल। हम वुड को यहाँ भी यूज कर सकते हैं, हम वुड को माइंड के साथ भी यूज कर सकते हैं, है ना। जैसे मैं बताऊँ, वुड यू माइंड वेटिंग फॉर अ मोमेंट, बुरा ना माने थोड़ी देर इंतजार कर लें, और माइंड क्या जेरेंट लगेगा, वर्ब की एनजी फॉर्म, है ना। ये भी क्या है, रिक्वेस्ट है। अगर मैंने रिक्वेस्ट मैं बताऊँ वुड यू माइंड ओपनिंग द विंडो, बुरा ना माने तो खिड़की खोल दें। ठीक जी, तो हम वुड को माइंड के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, वुड को हम एक और जगह इस्तेमाल कर सकते हैं परमिशन लेने के लिए। जैसे हम बताऊँ वुड यू माइंड इफ आई कम, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आ जाऊँ। अक्सर आपने ये भी सुना होगा। वुड यू माइंड इफ आई स्मोक, अगर आप बुरा ना माने तो मैं सिगरेट पी लूँ, तो वहां भी आप वुड लगा सकते हैं पोलाइटली परमिशन लेने के लिए। रिक्वेस्ट करनी है तो वुड यू माइंड क्या एनजी फॉर्म, और परमिशन लेनी तो वुड यू माइंड के आगे फर्स्ट फॉर्म लगा लें, वुड यू माइंड इफ आई कम, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आ जाऊँ। वुड यू माइंड इफ आई आस्क एनी क्वेश्चन, अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक सवाल पूछूं। सही जी। सर इस तरह जुमला बन सकता है कि वुड यू माइंड योर लैंग्वेज। वुड यू माइंड योर लैंग्वेज, यस। हाँ बना सकते हैं, बट ये कहते हैं वुड यू माइंड इफ आई, अगर आपने परमिशन लेनी है, इफ यू वांट टू टेक अ परमिशन देन यू कैन से वुड यू माइंड इफ आई आस्क अ पर्सनल क्वेश्चन टू यू। आई वुडंट माइंड, अच्छा अगर आपने मना करना, नो मैं बोलता हूँ आई वुडंट माइंड या आई वुड माइंड। मैं बोलता हूँ हाँ मैं बुरा मानूंगा या मैं नहीं मानूंगा, मैं बोलता हूँ नो आई वुडंट माइंड। जैसे मैं पूछता हूँ वुड यू माइंड वेटिंग, बुरा ना माने थोड़ी देर इंतजार कर लें, तो मैं बोलता हूँ नो आई वुडंट माइंड, मैं बोलता हूँ यस आई वुड माइंड। तो ये इंटरपर्सनल यूजेज है। इसको आप विल को फ्यूचर एंड पास्ट के लिए भी इस्तेमाल कर सकती हैं, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट में भी विल का पास्ट जो है वो वुड बन जाएगा। इसके अलावा पास्ट हैबिट के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई खास किस्म की कैरेक्टरिस्टिक किसी शख्स के अंदर हो तो भी हम वुड को इस्तेमाल कर लेते हैं पास्ट के लिए। जैसे मैं कहता वुड इज यूज्ड फॉर द पास्ट ऑफ विल टू टॉक अबाउट द हैबिट ऑफ टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक, यानी किसी बंदे के अंदर बड़ी पेचीदा किस्म की कैरेक्टरिस्टिक थे, किरदार थे, तो हम उसके लिए भी वुड यूज कर सकते हैं। जैसे when she was old she would sit in the corner talking about herself for hours। मैं बोलता हूँ जब वो बूढ़ी हो गई थी तो वो बैठी है कॉर्नर में अपने बारे में बातें करती रहती थी, यानी उसके एक टिपिकल बिहेवियर उसका हो गया था। तो किसी का टिपिकल बिहेवियर बताने के लिए पास्ट में हम वुड को इस्तेमाल करते हैं। लाइक आई सेड समटाइम्स ही वुड ब्रिंग मी अ लिटिल प्रेजेंट विदाउट सेइंग एनीथिंग, यानी कभी कभार वो तोहफे ले आती थी, अजीब व गरीब उसका बिहेवियर था, तोहफे ले आती थी बगैर किसी वजह के। तो मैं बोलता हूँ ऑन संडे when I was a child I would get up early in the morning, है ना। यानी मैं तो जब मैं छोटा था मैं संडे को भी जल्दी उठ जाया करता था। मेरा अजीब व गरीब किस्म का कैरेक्टरिस्टिक और अजीब व गरीब किस्म का बिहेवियर था। यानी किसी का अजीब व गरीब किस्म का बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक हो तो भी आप वुड इस्तेमाल कर सकते हैं पास्ट के लिए, है ना। अच्छा, पास्ट को आप लोगों को क्रिटिसाइज करने के लिए भी कर सकते हैं, यार तुम्हारा रवैया कैसा था, है ना। सेंटेंस विद स्ट्रेस ऑफ वुड कैन बी यूज्ड टू क्रिटिसाइज पीपल बिहेवियर, लोगों के बिहेवियर को भी आप पास्ट में क्रिटिसाइज कर सकते थे। जैसे मैं बोलता हूँ ही वॉज अ नाइस बॉय, वो बहुत अच्छा लड़का था, बट ही वुड टॉक अबाउट हिमसेल्फ ऑल द टाइम, लेकिन वो अपने बारे में ही बातें करता रहता था। तो जब आपने पास्ट में किसी के बिहेवियर पे क्रिटिसाइज करना है तो भी आप वुड लगा सकते हैं। राइट, ही वॉज अ नाइस बॉय बट ही वुड टॉक अबाउट हिमसेल्फ ऑल द टाइम, कि वो बहुत अच्छा बंदा था लेकिन वो हमेशा अपने बारे में ही बातें ही करता रहता था, या वो हर वक्त सोचता ही रहता था, है ना। मैं बोलता हूँ ना ही वुड थिंक अबाउट समथिंग। सही है ना। सर इस तरह बना सकते हैं वुड यू आर योर सेंसेस। नहीं जी, वुड यू आर नहीं बन सकता, वुड के साथ आर कहाँ आएगा, वी कैन नॉट यूज आर विद वुड। वुड इज अ मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब के साथ इज एम आर वी कैन नॉट यूज, नॉट नीदर डू डज भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। आर यू इन योर सेंसेस हो सकता है, वुड नहीं आ सकता, वुड कैन नॉट यूज। मैं तो अपने वुड के सारे यूज बता रहा हूँ। नंबर 1 वुड जो है विल की जगह आ सकता है। नंबर 2 वी कैन यूज वुड इन द डायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच। नंबर 3 for the past and future. Number 4 interpersonal skill. Number 5 past behavior.
पास्ट हैबिट्स, यानी पास्ट में किसी का टिपिकल बिहेवियर आपने बताना है, सो यू कैन वुड एज वेल, यू कैन यूज वुड एज वेल। लाइक आई सेड you would tell Mary about the party, I didn't want to invite her। मैं बोलता तुम ही बता दिया करते थे, मैं तो नहीं इसको बुलाना चाहता था। Stress can be used to criticize a single past action that's meaning the typical of you। मतलब तुम्हारी क्या हरकत थी, तुम क्यों बता दिया करते थे उसको। अच्छा, वुड को हम यूज टू की जगह भी नई इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ आई यूज टू प्ले, आप यूज टू नहीं लगाना चाहिए, आप बोलती हैं आई वुड प्ले डेली, मैं रोजाना खेला करती थी, है ना। मैं बोलता हूँ मैं रोजाना स्कूल जाया करता था, तो मैं क्या बोलूंगा, आई यूज टू गो टू स्कूल डेली और आई वुड गो टू स्कूल डेली। सही जी। यूज टू की जगह आप रिपीटेड एक्शन के लिए वुड लगा सकती हैं, लेकिन यूज टू के साथ हम स्ट्रेट वर्ब लगा सकते हैं, लेकिन वुड के साथ हम स्ट्रेट वर्ब नहीं लगा सकते। जैसे मैं बोलता हूँ आई यूज टू बी रिच, अब यहाँ नहीं है वुड आएगा, आई वुड बी रिच इज रॉन्ग। सही जी। आई यूज टू बी रिच हो सकता है और आई यूज टू हैव अ कार, आई वुड हैव अ कार नहीं हो सकता, दैट इज रॉन्ग। सही है। सर यूज टू का एंड मतलब तो आदि होना होता है, तो वुड गो टू हाँ, स्कूल रिपीटेड एक्शन, जेली, तो इसका रिपीटेड क्या एक्शन, मतलब होगा? आदि नहीं है, आदि नहीं है, इसका मतलब है अच्छा, रिपीटेड एक्शन इन पास्ट, ऐसा काम जो पास्ट में होता था बट नॉट हैपनिंग राइट नाउ, और अब नहीं हो रहा। रिपीटेड एक्टिविटीज इन पास्ट, हैबिचुअल और हैबिचुअल एज वेल, आदतन जाते थे। हैबिचुअल वो प्रेजेंट में है ना, जैसे मैं बोलता हूँ आई एम यूज्ड टू टी, मैं चाय का आदी हूँ क्योंकि मैंने इतनी पीता हूँ, आई हैव एक्सपीरियंस सो मच, तो मेरी लाइफ का एक पार्ट बन गया है, आई हैव बिकम फेमिलियर विद इट। तो बी यूज्ड टू अलग है, यूज्ड टू अलग है एंड गेट यूज्ड टू अलग है। देयर आर थ्री टाइप ऑफ यूज्ड टू। यूज्ड टू भी तीन टाइप के हैं, बी यूज्ड टू एंड गेट यूज्ड टू। देयर आर थ्री टाइप ऑफ यूज्ड टू। सही जी। अच्छा, आप यूज टू की जगह वुड एक्शन वर्ब में यूज कर सकती हैं, लेकिन स्टेटिव फॉर्म में यूज नहीं कर सकती। यू कैन नॉट यूज विद स्टेटिव वर्ब, बट यू कैन यूज विद एक्शन वर्ब। लाइक आई यूज टू गो टू स्कूल, आई यूज टू बी एंग्री हो सकता है, आई वुड बी एंग्री नहीं हो सकता। वुड जो है वो यूज टू की जगह भी आ सकता है। वुड किसी की पास्ट हैबिट को भी डिफाइन कर सकता है। वुड जो है वो आपके इंटरपर्सनल यूजेज भी यूज कर सकता है। वुड फ्यूचर एंड पास्ट भी बता सकता है। वुड विल की जगह भी ले सकता है एज अ सॉफ्टनर, और वुड डायरेक्ट एंड डायरेक्ट में विल की जगह ले लेगा। एंड दैट इज द वुड। यूजुअली पीपल आर वेरी मच कंफ्यूज अबाउट द वुड, कि वुड क्या है। दिस इज द वुड ऑल अबाउट। यस मिस सिन्हा, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? We also use with in passive. हाँ, भी कर सकते हैं। Like would it be And done or in will it be done? conditional as well. Oh, like a will. Will की जगह you can use would instead of will as a softener form. I will come tomorrow, I would come tomorrow. Yes, yes, sir. And in passive, I said it will be done or it would be done. it would Class be will be done. It taken, will class be would done. be taken. No, class will be taken, class would be taken. Both are the same, no difference. अच्छा, would is a helping verb of conditional. Conditional का helping verb भी है. Remember this. It's a helping of conditional as well. Will जो है, would जो है is a helping verb of the conditional. मैंने तो अभी तक conditional पढ़ा ही नहीं। अब वो sir will teach me, sir will guide me whether to teach a conditional or not. अच्छा, ये हो गए। Now exact 10 o'clock is here or we have completed all the modal verbs in detail. Sir, Thanks God. sir, sir, I why would go don't to we school teach daily. on Friday? How much time would Going you to take? take a class. Oh, we have learned all the models now, alhamdulillah, in 4 days Yes, in detail. sir. Thank you so much, In sir. You detail. I have have taught taught you in us detail. very good detail, and thank you so much, sir. And we Achha, understand did you learn? very well. You need to know, no? So you can use good English, you can write well. If you don't know the usage, you cannot use well. If you don't know the usage, can, could, should, may, might. Usually people are not Sir, teaching in detail. sir, I'm Sir, confused after about would or models, what used to. Would or used to है, Yes, they are sir, alternative. I would go to school daily. इसको हम उर्दू में कैसे बोलेंगे? और I मैं used to रोजाना go, स्कूल जाया करती थी, और और I used to go सेम to school. इसकी ये भी यही है, Same मैं used रोजाना to. स्कूल में। बिल्कुल. Would is Okay. alternate. Would and used to are same. I would go sir? to school daily, I used to go to school daily. लेकिन would में हम state नहीं लगा सकते and used to में हम state लगा सकते हैं. Like I used to be naughty, I used to have a car. लेकिन उसमें नहीं लगा सकते हैं.
Sir, सही Sir, नहीं can we आपको use would have been done. sir, can we use आपके मॉडल have वर्ब be? would have हम लोग यूज करते हैं कंडीशनल में पास्ट इन पास्ट कंडीशनल Okay. in the Sir, third now, conditional. sir, you said now we can use would instead of will. So that's why I'm Yeah. asking, case. So can we use be or have with would? But usually we are not using stative form में हम use नहीं कर रहे. We are not using in a stative form. हाँ आप कह सकते हैं I would be in class tomorrow or I will be in class tomorrow. I would be there tomorrow or I will be there. I would have a car in the less definite form. अगर यकीन थोड़ा कम हो तो would लगा दें. Otherwise you can use will. If you have a more certainty or the less certainty, you can use would. Or the more certainty you have, you can use will. I will have a car. Certainty Sir, is more. I would have a car like a man might. सर क्या अब आपके जो आपके लेक्चर थे all इसकी models have been done. सर sir, क्या what will बड़ी we मैंने आपको learn बताऊं, let me tell after you one thing. model? बड़ी जल्दी जल्दी पढ़ाया है मैंने. I have taught you in a very much in hurry. Yes, sir. सर आई एम Because the time आस्क was वन very short. क्वेश्चन जी. Yes, you सर can ask. आपकी जो रिकॉर्डिंग है ये हमें मिल सकती है क्योंकि ये Yes, वो you can जल्दी get it. जल्दी हो रहा है ना ताकि 2-3 मरतबा हम Time सुन is ले very तो वो short. दिमाग में बैठ जाए। Basically, I have been given only 4 days. Sir said me teach me in a 4 day. That's why I'm not teaching in detail. अगर sir ask me to teach in a detail तो मैं practice के साथ पढ़ाऊंगा फिर आपको. तो यहाँ तो practice ही नहीं हो रही ना. There is no practice. If sir ask me to go with the practice, then we will go with the practice. Should, can, could, may, might, would, whatever, we'll go with the practice. Then I'll give you a chance. Okay, give you a sentence. Because the time is very short. Basically, that is a quick grammar class. That is the problem. Yeah, that is a quick grammar class. That is the problem. That is why I cannot do the things which I'm supposed to do. अच्छा इसमें supposed to वगैरह रह गया because I couldn't get the chance to teach them. That is why I was sir, trying to we put have the to model. use be likely to. Be likely to शायद be likely to we are using in the question of possibilities. अगर possibility का question पूछना हो क्या कल बारिश होगी शायद. So may might we cannot use in a question. So with is it likely to rain tomorrow? Okay, sir. Doubt. Be likely to remember sir. I am likely to take class tomorrow. शायद मैं कल class लूँ. Like a may might. I may class take tomorrow. Or I might. Okay. Okay, sir. Okay. Further inshallah we'll do in maybe do you have a class in next Monday or not, I don't know. Sir will tell me, so I'll follow the instructions as I'll be told. So I've taught all the model verbs, but I couldn't teach some of the things because I didn't get the chance, and some of the things I couldn't, like supposed to. And supposed to is just like expectations. यानी होना कुछ चाहिए था लेकिन हो कुछ और गया. जैसे मैं बोलता हूँ cats are supposed to be afraid of dogs, है ना. मैं बोलता हूँ बिल्लियों को कुत्ते से डरना चाहिए लेकिन वो कुत्ते बिल्लियों से डर रहे हैं. तो होना कुछ चाहिए था लेकिन हो कुछ और गया. That is why we are using be supposed to. Remember this. Be supposed to is like a be supposed to we are using for the rules and regulation, and we are using for the expectations, for the credits, for criticizing ना. जैसे मैं expect कर रहा हूँ आप उर्दू इंग्लिश बोलेंगे और आप उर्दू बोल रही है, मैं बोलता हूँ you are supposed to speak English. What is your problem? तो बी सपोज टू की भी 2 से 3 मीनिंग है. रूल्स एंड रेगुलेशन के लिए भी बात करता है, एक्सपेक्टेशन के लिए भी बात करता है. इफ आई गेट द चांस इंशाल्लाह आई विल टीच यू इन डिटेल. But the time has finished now. Maybe your another teacher is waiting. So inshallah I'll see you in next class. Okay, take care. Till then, Allah Hafiz. Allah Hafiz, sir. Allah Hafiz, sir. Allah Hafiz, sir. sir. Allah Hafiz. Hello everyone, Assalamu alaikum. Alaikum assalam, ma'am. How are you? Walaikum assalam. I'm pretty well, dear. How about you all, girls? Yeah, good, ma'am. How is it going? How about your grammar? How Alhamdulillah, was your perfectly homework? good.
Please mute yourself, girl. What's this happening? Mute yourself, girls. Be quick. How about your grammar, dear? How is it going? Ma'am, grammar going is good. Fast, That's fast. good. So, have you improved a lot about the grammar? It is going getting better. regularly. Yes, ma'am. Wow, that's great. That's great. Okay, let me know. Screen is visible to your side. Yes, ma'am. All right. There's a topic for discussion, and it would be considered as your fluency test. So you have to speak on it and try to speak fluently without thinking, without taking pause, without getting stuck. Okay? Because now most of the girls have become used of it. You are not new here. Ira, please mute yourself. Ira, mute yourself kindly. Okay. So try to speak just in your own way. No need to follow others. Everyone have their own accent. Everyone have their own style of speaking, expressing yourself. So be confident and try to speak fearlessly, confidently, courageously. So please, let's get started. Raise your hands. I need all of your participation, dear. Ma'am, Yes, we Hina. have something from you. Ma'am, I have to go for eating dinner and I'll be back in 15 minutes. Okay, ma'am? Yeah, sure, dear. When you will be back, raise your hand, okay? Okay, ma'am. Then you will kindly give me chance. Yeah, sure, Hina. It's good that you have informed me before. That's a good thing. That is a good manners. Okay, girls, raise your hands quickly without wasting your time. I'll call your name. Choose any topic according to your choice, right? Firstly, you have to choose one topic. If we get extra time, then I'll give you again a turn to speak on the different topic, right? So please hurry up. Raise your hands quickly. Yeah, there's only Sajda. She's raising her hand. Definitely, I'll give her preface because yesterday she was not. She was, I think, so late. That's why she was couldn't able to speak. So, what's about the other girls? I know all of you have tired. It's too late, but please, if you are in the class, try to participate. Okay. I'm also feeling the same thing, but I'm energetic for yourself. I know I have to teach you, so for that reason, I try to make myself more vigilant and energetic. Although I'm also like have the hectic day. I was occupied badly. You can't imagine how much it is. So please, girls, raise your hands. And firstly, Sajda, it's your turn. Then Kawal, then Tayeba. Okay. Uh, okay, yeah, fine. Sajda, unmute yourself. अस्सलाम वालेकुम मैम मैं Walaikum फर्स्ट में तो assalam. ज्यादा नहीं बोल सकती लेकिन बोलूंगी थोड़ा सा You can speak, but I think so. You can't speak in English. Otherwise, you can speak very well, I know. But I feel delighted if you will speak with the same speed in English as you speak as you are used to of speaking in Urdu, right? yes ma'am ma'am first I say something for your मतलब आपके लिए मैं कुछ कहना चाहती हूँ Okay, dear, sure. your one habit I really like your this attitude, yeah, this habit, because you are our mistakes define our mistake. This is a very good point. I like this. Okay. I really like this. Okay, dear. It's all your kindness because I would say that it's your goodness that you feel happy and you feel like if you feel that you are getting improved. Otherwise, I can just say it, okay, yes, you spoke really